In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. Welcome to our channel Easy English with Professor M.Masood. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ टी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये जो प्रोनाउंसिएशन की सीरीज़ है ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी इंग्लिश को अहले ज़ुबान की तरह बनाना चाह रहे हैं। यानी अगर आप नेटिव एक्सेंट में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ये तमाम सीरीज देखनी चाहिए और इसकी खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वॉइस्ड एंड वॉइसलेस लेटर्स को स्टडी कर लिया है, इस वीडियो में हम सिर्फ साउंड ऑफ टी की प्रैक्टिस करेंगे। टी इज अ वॉइसलेस लेटर, यानी टी जो है ये वॉइसलेस लेटर है, यानी सॉफ्ट लेटर है। इसे टे नहीं कहना। टे जो है वो उर्दू का लेटर है, जबकि इंग्लिश में साउंड इज टी, यानी जैसे हम ठा बोलते हैं इसी तरह से ये साउंड है ठा की। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं दोबारा ये बात रिपीट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चाहे टी लफ्ज़ के शुरू में आए, चाहे लफ्ज़ के दरमियान में आए, चाहे ये लफ्ज़ के आखिर में आए, द साउंड रिमेन्स द सेम, यानी आवाज़ इसकी एक जैसी रहती है। टी शुरू में आए जैसे टेल, या टी दरमियान में आए जैसे रैटल, या टी लास्ट में आए जैसे रॉकेट। ठे की साउंड ही आएगी, साउंड नहीं चेंज होगी। तो इसकी अब अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, होपफुली यू विल हैव वेरी गुड प्रोनाउंसिएशन। तो अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। आइए अब हम टी की प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ टी जो है ये शुरू में तमाम वो अल्फाज हैं जिनमें टी को शुरू में दिया गया है। जस्ट टी, टी, टर्टल, turtle, ticket, ticket, tomato, tomato, table, table, task, task, tall, tall, triangle, triangle, turn, turn, town, town, teacher, teacher, taxi, telephone, telephone, torn, torn, trouser, trouser, tiger, tiger, top, top, tie, butter, butter। अच्छा, यहाँ से वो अल्फाज शुरू हो गए हैं जहाँ टी की साउंड मिडल में आ रही है। bitter, bitter, little, little, button, button, winter, winter, late, late, water, water, after, after, rotten, rotten, kitten, kitten, better, better, potato, nutty, nutty, rutty, rutty, cotton, cotton, rattle, rattle, settle, settle, button। अब इसके बाद वो वर्ड्स आएंगे जिनके आखिर में टी की साउंड आ रही है, जस्ट लाइक bought, bought, chat, chat, flight, flight, felt, felt, thought, thought, mount, mount, sought, sought, caught, caught, short, short,
soft, soft, lot, lot, not, not. अच्छा, यहाँ मैं एक बात भी और बताता चलूँ, एन से पहले जब भी खे आता है तो खे साइलेंट, और साइलेंट लेटर्स को समझने के लिए आप मेरी साइलेंट लेटर्स की वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको तमाम साइलेंट लेटर्स एक ही जगह मिल जाएंगे जो इंग्लिश में लिखने में तो आते हैं लेकिन बोलने में नहीं आते। आइए इसके बाद हम कुछ ऐसे अल्फाज देखते हैं जिनके आखिर में ई डी आता है लेकिन टी नहीं होता, बट द साउंड इज टी। यानी ये ज़रा एंडिंग नोट कर लीजिए, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में सी आ जाए, सी खे आ जाए, खे आ जाए, एफ पी एच पी डबल एस एस एच एक्स या सी एच, और उसके आगे जब हम ई डी का इजाफा करते हैं तो साउंड इज़ अगेन लाइक टी, यानी हल्की सी टी की साउंड आती है, डी की आवाज़ नहीं आएगी, यानी डाल की आवाज़ आपने नहीं निकालनी। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। यानी फर्स्ट जो वर्ड है प्लेस्ड, डाल डी पड़ा हुआ है, लेकिन जब इसकी प्रोनाउंस करेंगे आप लोग तो सही प्रोनाउंसिएशन होगा इसका प्लेस्ड, यानी हल्की सी ठे की आवाज़ देंगे। ये तमाम जो अभी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, शुरू में मैंने आपको एंडिंग्स बता दी हैं, वो एंडिंग्स का ख्याल रखें, और उसके आगे जब भी ई डी का इजाफा हो तो उसकी जब आवाज़ होगी वो हल्की सी टी की, जस्ट लाइक प्लेस्ड, प्लेस्ड, पैक्ड, बैक्ड, rebuked, rebuked, sniffed, sniffed, danced, danced, placked, blacked, milked, milked, dwarfed, dwarfed, slipped, slipped, flapped, flapped, triumphed, triumphed, telegraphed, telegraphed, blessed, blessed, dressed, rushed, rushed, pushed, pushed, fixed, fixed, mixed, mixed. आपने जब भी इन अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करते वक्त एग्जेजरेशन से काम लेना है, यानी मुबालगा आमेज़ी से। जैसे जानबूझकर हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, इसी तरह अगर आप बढ़ा चढ़ा कर इन लफ्ज़ों को ऊंची आवाज़ से बोलेंगे तो बाद में ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपके पास आ जाएगा अच्छी। आइए अब हम इसी के कुछ टंग ट्विस्टर्स देखेंगे। आपकी ज़ुबान पर ये सेंटेंस चढ़ाने के लिए, साउंड्स को बेहतर करने के लिए कुछ हमने टंग ट्विस्टर्स शामिल किए हुए हैं, तो इनकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे and they will help you a lot. Tiny turtles taught Tina to tiptoe through tulips. Tiny turtles taught Tina to tiptoe through tulips. 10 tidy tigers took 10 taxis to Toldo. 10 tidy tigers took 10 taxis to Toldo. Tina talked to Timmy about a tomato truck. Tina talked to Timmy about a tomato truck. Better late than dead on time. Better late than dead on time. If at first you don't succeed, try and try again. If at first you don't succeed, try and try again. It was at a minute or two to two that the teacher was told a tale. It was at a minute or two to two that the teacher was told a tale. अब हम ठीक की साउंड की कन्वर्सेशन देखेंगे ताकि ठीक की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। आइए अब ठीक की कन्वर्सेशन देखते हैं कि ठीक हो कन्वर्सेशन में किस तरह इस्तेमाल किया गया है। Tessa, what time did you tell Tor's travelers to get here, Martin? Tessa, what time did you tell Tor's travelers to get here, Martin? Martin, any time between 10 and 12. Martin, any time between 10 and 12. Tessa, but it's after 2. They are terribly late. Tessa, but it's after 2. They are terribly late. Martin, why didn't you contact United Transport as I told you? Martin, why didn't you contact United Transport as I told you? Tessa, Peter Thompson said Thor's travelers were better. Tessa, Peter Thompson said Thor's travelers were better. Martin, Tessa, Peter Thompson's a director of Thor's travelers. Oh, blast it. I've torn my trousers on the radiator. Martin, Tessa,
Peter Thompson's a director of tourist travelers. Oh, blast it. I have torn my trousers on the radiator. Tessa, oh Martin, do take care. Hadn't we better telephone? Tessa, oh Martin, do take care. Hadn't we better telephone? Martin, I've tried. The telephone's not connected yet. Martin, I've tried. Martin, I've tried. The telephone's not connected yet. So I hope you must have enjoyed the sound of T. T की आवाज़ को हमने स्टडी किया है, ये सॉफ्ट साउंड है और उम्मीद है कि आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय फॉर नाउ।